Hello everyone and welcome back. So till now we learned what is analytic function, what is differentiable function and then Cauchy-Riemann equation. So आज हम लोग यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन के ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा सम्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे. So let us see the first problem. Test the analyticity of the function w equals to sin z. ठीक है, तो ये फंक्शन एनालिटिक होगा या नहीं होगा वो हमें चेक करना है. So now here w equals to how much? Sin z. So z कितना था? So z is x plus iy. Now which formula we'll use here? Sin a plus b. Okay. तो sin a plus b का formula क्या था? So this is sin a cos b. Sin a cos b plus cos a sin b. ठीक है. So first one is sin x cos iy. तो इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक cos iy is cos hyperbolic y. ठीक है, cos iy is cos hyperbolic y. Then plus cos x और ये जो sin iy है मतलब sin iy that can be written like this I into sin hyperbolic x, not x, ये y होगा sin hyperbolic y. ठीक है. सो इसका प्रूफ भी है, आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में मिल जाएगा. सो इफ पॉसिबल आप लोग उस जगह थोड़ा चेक कर लीजिएगा. नाउ यू हैव टू फंक्शन, दिस इज u एंड देन यहाँ पे एक i है. सो i इंटू v. तो हम लोग का जो u है, u यहाँ पे कितना आ गया? u इक्वल्स टू साइन x cos हाइपरबोलिक y और जो v है वो है cos x sin हाइपरबोलिक y. ठीक है. नाउ हमें कॉची-रीमान इक्वेशन चेक करना होगा. सो डेल u बाई डेल एक्स. सो विद रेस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? cos x और सेकेंड वाला टर्म एक ही रहेगा. नाउ विल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y. सो sin x विल रिमेन सेम हियर और cos हाइपरबोलिक y, हाइपरबोलिक रहने से वो पॉजिटिव रहता है. जैसे कि नॉर्मली क्या होता है इन डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आता है, लेकिन हाइपरबोलिक में वो क्या आएगा? वो सेम रहेगा. इट विल बी साइन हाइपरबोलिक y. ठीक है, साइन हाइपरबोलिक y. नाउ यहाँ पे आते हैं हम लोग डेल v बाई डेल एक्स. सो cos x, सो इट विल बी माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y एंड देन डेल v बाई डेल y. ओके, डेल v बाई डेल y. सो डेल v बाई डेल y क्या आएगा? दिस विल बी cos x सेम रहेगा एंड दिस इज साइन हाइपरबोलिक y का, जैसे कि cos में होता है वैसे ही होगा, cos हाइपरबोलिक y. ठीक है. सो एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो cos हाइपरबोलिक था उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक है, पॉजिटिव. नाउ लेट अस सी द कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई और नॉट. सो डेल u बाई डेल एक्स. ठीक है. सो दिस इज अवर डेल u बाई डेल एक्स एंड दिस इज डेल v बाई डेल एक्स. बोथ आर सेम इज इक्वल्स टू डेल v बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू हाउ मच? मतलब ये और ये. सो दोनों सेम ही है लेकिन माइनस में माइनस का डिफरेंस है. सो दिस इक्वल्स टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स. सो दिस इज नथिंग बट कॉची-रीमान इक्वेशन. सो देयरफॉर कॉची-रीमान इक्वेशन satisfies. ठीक है, कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई. सो कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होने से क्या होगा? द फंक्शन इज एनालिटिक. सो देयरफॉर f of z is analytic. So it's a very simple question. Okay. Now let us take another problem. Okay. Determine whether the function 2xy plus I into x square minus y square is analytic or not. So here, which is the real part? Our real part is 2xy and imaginary part is x square minus y square. So again the same form. So del u by del x. So with respect to x से डिफरेंशिएट करने से यहाँ पे जो x है इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा. So you have twice y. Now del u by del y. y से डिफरेंशिएट करने से in similar way twice x. Del v by del x, it is twice x and then del v by del y. तो क्या होगा? माइनस ट्वाइस y. नॉर्मली जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वैसे ही है.
Now we have to check that this particular function is what, analytic or not. Now this is our del u by del x, this is what, del v by del y. So therefore del u by del x is, दोनों अलग अलग है, माइनस का डिफरेंस है, नॉट इक्वल टू del v by del y. Similarly del u by del y, del u by del y एंड del v by del x, ये दोनों क्या होना चाहिए था, दिस टर्म और दिस टर्म सेम बट नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, सो इज नॉट इक्वल टू माइनस del v by del x. सो अगर कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, सिंस CR इक्वेशन doesn't satisfy, so the function तो दिया नहीं है, so the given function is not analytic. ठीक है, तो आप लोग अगर चाहे तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसको आप लोग f ऑफ z मान के भी मतलब प्रॉब्लम को आगे कर सकते हैं. So this is also same, this here Cauchy-Riemann equation is not satisfied. Okay, now let us go to some other problem. Okay, so ये प्रॉब्लम देखने में थोड़ा सा अलग टाइप का है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ओके, वी हैव टू रिमेंबर वन लाइन. आप लोगों को शायद याद होगा, जो मैंने पहला जो लेक्चर था उसमें कॉची-रीमान इक्वेशन का मैंने स्टेटमेंट लिखा था. तो जो सफिशिएंट पार्ट है, आफ्टर सफिशिएंट पार्ट मैंने एक नोट लिखा था वहाँ पे. सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट वी हैव द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी जेड या तो एफ डैश ऑफ जेड, क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स. सो दैट पर्टिकुलर result we have to use here. Okay, now w is nothing but u of x comma y plus I into v of x comma y. ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है, w equals to u plus iv. u is a function of x comma y and then v is also a function of x comma y. now आप लोग यहाँ पे पहला जो लाइन है देखिए, if w equal to f of z is analytic, so यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है. Since w equals to f of z is analytic, so if the function is analytic, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो बोल सकते हैं. तो del u by del x is equals to del v by del y and del u by del y is equals to minus del v by del x. ओके, सो कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होगा क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो ऑलरेडी एनालिटिक है. now I am talking about that particular line dw by dz. okay, या तो f dash of z. so this we can write del u by del x plus I into del v by del x. ठीक है, ये आफ्टर सफिशिएंट कंडीशन जो था वहां पे था. सो इसका प्रूफ मैंने वहां पे मतलब डिटेल में नहीं दिया था. सो आप लोग कोई भी बुक आप लोग फॉलो कीजिए. इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर प्रूफ फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, द प्रूफ इज नॉट एसेंशियल, दैट्स व्हाई आई डिडंट इंक्लूड. सो ये प्रूफ आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा. नाउ दिस इज इक्वल्स टू, नाउ इन प्लेस ऑफ del u by del x, नो इन प्लेस ऑफ del u by del x वी कैन राइट del v by del y by Cauchy-Riemann equation, del v by del y plus I into, then in place of del v by del x what we can write, minus del u by del y. now we have two different expression. ठीक है, एक तो ये आ गया, ये एक्सप्रेशन, दिस इज वन एक्सप्रेशन एंड दिस इज अनदर एक्सप्रेशन. बोथ आर सेम बट इट स्लाइटली डिफरेंट. नाउ ये जो पहला वाला जो है, यहाँ से हम लोग del del x कॉमन ले सकते हैं. ओके, सो इफ वी टेक del del x कॉमन, व्हाट वी हैव, u प्लस iv रहेगा. लेकिन जो दूसरा जो इक्वेशन है वहाँ पे क्या है, अगर हम लोग यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेने से क्या आएगा, आई डेल यू बाई डेल वाई, और ये भी माइनस हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई. ठीक है, मैं इन डिटेल इसको मतलब करके आप लोगों को दे रहा हूँ. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू डेल डेल एक्स, ये u प्लस आई वी इज नथिंग बट w. और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक माइनस है. ठीक है, इस माइनस को अगर प्लस करना है तो क्या होगा, इफ वी वांट टू
राइट दिस माइनस एन, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, इफ वी वांट टू राइट दिस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमें एक आई स्क्वायर लिखना होगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज हाउ मच, -1. Now from both the term we can take one I common. So now we have del u by del y plus I into del v by del y. ठीक है, so this implies del w by del x is equals to minus I into, now we can take del y common. So if we take del y common, again we have u plus iv. ठीक है, so this implies del w by del x is equals to minus I into, now again u plus iv, so u plus iv is w. So this is the answer. Okay, dw by dz is equals to dw by dz is equals to del w by del x minus I into del w by del y. तो इसके साथ और एक रिलेशन है, ये तो पहला पार्ट हो गया. ऑल्सो प्रूव दैट डेल स्क्वायर w by del z बार. देखिए, डेल स्क्वायर w by del z बार इज इक्वल्स टू हमारा 0. तो ये सिंपली है, जैसे कि डेल w by del z. सो w में क्या है, u और v, वहाँ पे z नहीं है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, सो इफ दिस इज 0, अगर उसको हम लोग दूसरा एक नया वेरिएबल से डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज del z बार, तभी वो 0 ही रहेगा. 0 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा. ठीक है, इसको आप लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये डेल स्क्वायर w बाई del z बार है, तो अगर चाहे तो आप लोग इसको डेल स्क्वायर w बाई del z भी लिख सकते हैं, सेम है. Okay, now let us take one last problem. Find the constant a, b and c if, okay, if f of z equals to, यहाँ पे u और v दिया हुआ है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो x y z का वैल्यू हमें निकालना है. सो दिस इज अगेन ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम. सो u इक्वल्स टू हाउ मच, x प्लस ए वाई, एंड देन v इज bx प्लस cy. ठीक है, तो पहले हमें डेल यू बाई डेल एक्स निकालना होगा. सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये 1 होगा, ये तो 0 हो जाएगा. डेल यू बाई डेल वाई, सो नाउ पहला वाला टर्म 0 होगा और ए वाई का डिफरेंशिएशन a. डेल v बाई डेल एक्स इज b, डेल v बाई डेल y इज इक्वल्स टू हाउ मच, c. ठीक है, सो सिंस f of z इज एनालिटिक, so CR equation satisfy. तो CR इक्वेशन क्या था, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल v बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल y is equals to minus del v by del x. Now what is del u by del x? Del u by del x is 1 and del v by del y is c. So c का वैल्यू मिल गया, c equals to 1. Now here del u by del y. So del u by del y is a. This is equals to what? Minus b. तो a और b का वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, बट विल गेट ए रिलेशन इन बिटवीन a एंड b. बट जो c का वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया. ठीक है, नो सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम बहुत सारा है, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है. सो काइंडली आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, सो यू विल बी वेरी वेरी good in the problems related to analytic function and Cauchy-Riemann equation. So thank you for watching. We'll meet you in the next video very soon.